Good morning, all of you. Good Good morning, sir. Good morning. Sir, my voice is audible to you? Yes. Beta, we are doing the exercise 4F, last exercise of rational numbers. And I think we have done till second part of question 3. Let us start the third part of question 3. Yes, sir. Yes. Third part question 3. All of you, you ready? Exercise 4F, rational numbers. Exercise 4F. Hmm. This we have to do question 3. Hmm. Sir, we have to start from question 3, second part. Third part, No, sir. Third part. 9 upon 8 divided by x. यहाँ पर फिर से we have taken x in place of blank की जगह x लगा दिया, equal to minus 3 upon 2. यहाँ से we have to find the value of x. So how will you do this? 9 upon 8 multiplied by 1 upon x. 1 upon x, ठीक है, equals to minus 3 by 2. अब 1 अपॉन एक्स को एलएचएस में रहने दीजिए, 9 और 8 को जो हम आरएचएस में लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 3 बाई 2 इंटू 8 अपॉन 9. 8 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 9 डिनोमिनेटर से, ठीक है. दिस इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या कर रहे हो दक्ष बार? So now simplify this. 1, 4, 3, minus 1, minus 1 into 4, minus 4, 1 into Minus 3, 4. minus 4 upon 3. अब ये 1 upon x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू नहीं है. You have to find the value of x, so you will do reciprocal both the sides. Reciprocal करेंगे तो यहाँ पे x upon 1 आ जाएगा, x upon 1 में upon में अगर 1 होता है, you can there is no need to write it, equals to 3 upon minus 4. Reciprocal, दोनों तरफ reciprocal कर दिया, LHS RHS. Okay, so x equal to 3 upon minus 4. If you want, you can shift the minus sign in the numerator. Minus 3 upon 4. Any doubt? No, sir. Sir, please don't remove. I am not removing. Okay. Question 4. Divide the sum of 65 upon 12 and 8 by 3 by their difference. इन दोनों के सम को इन्हीं दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करें. Question 4, good question. क्या हो गया बेटा?
Orange color. Sir, please, sir. Orange color is good. No, Yes, sir, sir. yellow. Question 4. Is it fine? Yes, sir. 65 upon 12 plus 8 upon 3. Divide the sum of these two. इन दोनों का सम हमें किससे डिवाइड करना है? By the difference of these two. 65 upon 12 minus 8 upon. तो फर्स्ट ब्रैकेट में इन दोनों का सम करेंगे, सेकंड ब्रैकेट में इन दोनों का डिफरेंस करेंगे यानी कि माइनस, एंड देन यू डिवाइड. ओके, अंडरस्टूड? Sir, in the third question, can we write like this also? Sir, can we write this also? Ki, x upon x equals minus 3 upon 4. Yes, yes. Now here the LCM is 12. 65 plus 32. Sir, you have written wrong figure. Wrong figure? Sir, yes, sir. First come minus 12 divided by x equals 6 upon 5. अरे बेटा ये क्वेश्चन 4 कर रहा हूँ, not the fourth part. Question 4. Fourth part is your homework. Okay. So 65 plus 32 upon 12 divided by, again the LCM is 12. 65 minus 32. 65 plus 32 is 97. 97 upon 12 divided by 65 minus 32 कितना होगा? 33 upon 12. Now 97 upon 12 multiplied by 12 upon 33. 97 upon 12 multiplied by 12 upon 33, reciprocal. 12 से 12 cancel. So answer is 97 upon 43. This is the answer. Sky बेटा कैमरा ऑन कर लो. Sky, अथर्व सक्सेना, उत्कर्ष, start your camera. Sir, my camera is open. Aditya Pratap, Jasmine, Ishu. Sir, Please Ishu is saying to me that I cannot hear anyone. Done. Aditya Pathak, please start your camera. Aditya Pratap, please start your camera. Umama, Sushant, Siddharth, start your camera. Start your video. Sir, the answer is 97 upon 33. Answer is 97 upon 50. Sir, I want to ask one thing. Yes. Sir, in the question it is given by the difference, what you add these two. Sorry beta. Sir, in the question is asking that two minus, but you add these two numbers. So in the question it is
given divide the sum of 6 upon let 65 upon 12 and 8 upon 3 with the Daksh, let me answer explain. of You were that. not listening when I was explaining. Listen, divide the sum of these two numbers, यानी कि पहले ऐड करेंगे इन दोनों नंबर्स को सम करेंगे बाय द डिफरेंस ऑफ दीज टू, यानी कि माइनस भी करेंगे दोनों नंबर्स को बाय द डिफरेंस, बाय देयर डिफरेंस, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस भी निकालेंगे एंड then you will divide after adding the numbers whatever you get, सम जो आएगा उसको एंड डिफरेंस जो आएगा उसको डिवाइड कर लेंगे डिफरेंस से, ठीक है। सम को डिफरेंस से डिवाइड करना है बस, अंडरस्टूड। Yes, sir. नेक्स्ट, by what number should this be divided to get -11/3? So let the number be x. Question number So I think today we will complete this exercise and tomorrow we will start the new chapter. question number 5. So let the number be x. अब यहाँ पर लिखा है कि we should divide this number -44 upon 9 by what number? We should divide this number by which number so that you get -11/3. इसको कौन से नंबर से डिवाइड करें? जो हमने मान लिया x से डिवाइड करेंगे, ओके। So -44 upon 9 divided by x is equal to -11/3. Now you can simplify. -44 upon 9 multiplied by 1 upon x. x का रेसिप्रोकल हो गया 1 upon x. डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, -11/3, ओके। अब माइनस ये जो 44/9 है, you will take to RHS 1 upon x equals to -11/3. 9 जब RHS में जाएगा तो 9 न्यूमरेटर में चला जाएगा, -44 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ओके। You will not change the sign. -44 LHS से जब RHS में गया, we have not changed the sign. You can see why. Why are we not changing the sign in this case? बिकॉज यहाँ पर नंबर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है 1 अपॉन एक्स के साथ, तो जब भी मल्टीप्लीकेशन से हम आरएचएस में लेके जाते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं। हमने यहाँ पर नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया आरएचएस में ले जाकर के, 9/-44 हो गया। Sir, why not -9 upon 44? अरे -9/44 भी लिख सकते हैं उसको, माइनस साइन चाहे आप Sir, I will. न्यूमरेटर में लिखो चाहे डिनोमिनेटर में लिखो, नो प्रॉब्लम। Okay, now you simplify this. -11 divided by 11 is -1. -44 divided by 11 is -4. 3, 1, 9, 3. So 1 upon x equals to -1 into 3 is -3. 1 into -4 is -4. So this is 3 upon 4. 1 upon x equal to 3 upon 4. But what will be the value of x? Reciprocal कर लेंगे again. Reciprocal both the sides. X equal to 4/3. ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. It is same as the fourth part of question 3, बस यहाँ पर आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ी। क्वेश्चन 5 में हमने इक्वेशन भी बनाई है, क्वेश्चन 3 के फोर्थ पार्ट में इक्वेशन आपको पहले से ही गिवन है, ओके।
question. Sir, I think today will be complete. Question 6. Ready? Sir, it's the opposite question. In this question, we have to ask the multiply to get. Let's Yes. divide. Similar type of question, but a little bit difference. Sir, after this, which chapter we will do? We will do. Let's see. Sir, you have said reasoning. रीजनिंग तो आपको मारिया मैम पढ़ाती हैं. Sir, I am not asking of reasoning. I am asking of maths. Yes. नहीं वो स्काई शर्मा was saying reasoning. Question number 6. I will tell you after the chapter. Question 6. By what number should minus 8 upon 15 be multiplied to get 24? So again let the number be x. यहाँ पर बस divide की जगह multiply हो गया. Let the number be x. So by what number minus 8 upon 15 be multiplied? So let it be multiplied by x. To get, what do you get? To get 24. आपको 24 मिल जाएगा. Okay. So x equals to 24 into 15 upon minus 8. ठीक है. Again cross multiplication. Minus 8 divided Sir, by can we 3. write 1 in the place? Sir, can we write 124 upon 1? Yes, you can write. It is your choice. You can write 24 upon 1. So minus 8 divided by 8 is minus 1. 24 divided by 8 is 3. So x equals to 3 into 15, 45 upon minus 1. Therefore, x equals to minus 45. 45 divided by minus 1 is equal to minus 40. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Question 10 is again of the same type. So you will do question 10, 8. Sorry, not 10. No, not sir, 10. it is not same type. No, question 7 and 8. 7 and 8, not 10, sorry. Question 7 and 8 are of the same type. So you will do in homework. I am doing question 9 here. Question 9, 7, 8, 9 तीनों देखो एक जैसे क्वेश्चन है. बस numbers change कर दिए. Am I right? इसमें देना. Get the questions. इसमें fraction है. Yeah. 7, 8, 9. All the three numbers are of the same. All the three questions are of the same type. And even question 6 was of the same type. Question 6 भी all same ही था. Okay. So let's do question number 9. 7 and 8 are your homework. Okay, sir. I hope you are doing practice at home. You all are doing practice at home or not? Sir, I'm focusing on my study. In tuition, I will revise. Question 9. The product of two rational numbers is minus 16 upon 9. So, two rational numbers का product minus 16 upon 9 है. If one of the number is given minus 4 upon 3, find the other. Let the other number be x. Let the other number be x. Now, first number is minus 4 upon 3.
इसको जब हमने सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करा यानी कि प्रोडक्ट की, the answer is minus 16 upon 9. This is the answer. Now you have to tell what is the value of x. I think the value of x is 4 upon 3. Let us simplify. Yes, sir. X equal to minus 16 upon 9 into 3 upon minus 4. तो x इक्वल टू यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दो, 9 को 3 से कट किया 3, 3 को 3 से कट किया 1, माइनस 16 को माइनस 4 से कट किया माइनस 4, 4 से कट किया माइनस 4 डिवाइड बाय 4 इज माइनस 1, तो माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, therefore x equals to 4 upon 3. Answer. X equals to 4 upon 3. Clear? Sir, why we choose the one of the number, not the product of two rational numbers? मतलब Sir, means why we write first one of the number? I'm not able to understand your question. सर मैं पूछ रहा हूँ कि पहले हम लोग वो वाला एक नंबर क्यों लिखते हैं जो दूसरी बार लिखा रहता जो गिवन है द फर्स्ट नंबर, भाई पहले फर्स्ट नंबर ही तो लिखना है ना, वैसे आप कोई भी नंबर लिख तो सकते वन हैं. इन वन केस ऑफ द नंबर, सर वन ऑफ द नंबर. in case of multiplication you will if you want you can write minus 4 upon 3 first, और चाहो तो x को पहले लिख लो. If you write minus 4 upon 3 into x or you write x into minus 4 upon 3, it is the same thing. No, sir, I am not asking this. I You am mean to say asking why this. are we not making the equation minus 16 upon 9 into x equal to minus 4 upon 3? ऐसा कह रहा है. Yes, sir, that I am asking. बेटा एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज माइनस 16. दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 16 अपॉन 9 आया, लिखा है देखो क्वेश्चन में पढ़ो. मल्टीप्लाई Yes, करने sir, के the बाद product of two rational हाँ number is इज minus माइनस 16 upon 16. 9. तो माइनस 16 अपॉन 9 दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद मिलेगा ना. तो माइनस 16 अपॉन 9 को कहाँ लिखेंगे आप, आरएचएस में लिखेंगे. अब दोनों में से एक नंबर आपको गिवन है माइनस 4 अपॉन 3, तो माइनस 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड नंबर हमने x मान लिए. अंडरस्टूड और नॉट? Okay, sir. Okay, question 10. By what rational number should minus 8 upon 39 be multiplied? Again, same question. Beta, have you all done this ninth one? Yes, sir, the last Yes, three sir. ones. Athar Saxena is a very good boy. Why, sir? He is a good boy. Very good boy. Sir, but he never opened the camera in Hindi literature class. Yes, sir. In every class, sir, only Smriti ma'am's class. His camera is on. And In sir, maths class also. sir, now only, na, sir? Sir, if we not open the camera, you will call him. Beta, he will open the camera because he is a very good boy. He always listens to what I am saying. Sir, Yes. sir, you know Sahil Bhasin? Sahil Basin, class 8th B. Sahil Basin. No, अच्छा sir. अच्छा साहिल वसीम. अरे हाँ बिल्कुल. यस आई नो. ही इज माय फ्रेंड. Sir, he is my mama. ही इज योर मामा. वेरी गुड. Yes, sir. So your Sir, mama he is, told about you कि you are the friend of. he is my friend. Sir, in house we call him Golu. बोलू मामा. Yes, sir. अच्छा वेरी गुड. मैं बताऊंगा बेटा कि मुझे अथर बता रहा था कि वो
मामा को अपने गोलू मामा बुलाते हैं। ठीक है, रिश्ते से। रिश्ते से। के लिए रिश्ते से मामा है ना, फनी में बुला। ओके, उन्होंने आपको एक बार कॉल भी किया था कोचिंग के लिए यस। शायद, तब वो मेरे घर पे ही थे। अच्छा, चलो क्वेश्चन 10 करते हैं बेटा। बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 5/26? देखिए, क्वेश्चन 10 सेम टाइप का ही है। सो लेट इट बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, या फिर लिख दो लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स। लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स। बेटा थर्ड कैमरा ऑन कर लो। बाय व्हाट नंबर -8/39 बी मल्टीप्लाइड, so let it be multiplied by x to obtain, now what do you get? You get 5/26। देखो सेम टाइप है, सारे क्वेश्चन एक जैसे। 5/26 मल्टीप्लाइड बाय 39/-8। 13 से कट कर लो, 2 3, 5 into 3 15 upon -8, which is also equal to -15/8। Answer. Understood? एक्सक्यूज मी सर, Yes, sir. सर डिड यू टीच क्लास 7 इन योर कोचिंग? Yes. ओके सर। Done. यस सर। So now which question we will do? Because last few problems are left. Sir, If yes, today I think sir we will start the new chapter. if 24 pairs of trousers of equal size can be prepared with 54 meter of cloth, 24 trousers हम 54 मीटर क्लॉथ से बना सकते हैं। What length of cloth is required for each pair of trousers? ओके, सो 54 मीटर क्लॉथ में 24 ट्राउजर्स बन जाते हैं। आपको बताना है कि एक ट्राउजर में कितना कपड़ा लगेगा। सो यू विल जस्ट डिवाइड 54 by 24। करियर स्टार्ट डूइंग, राइट द स्टेटमेंट्स योरसेल्फ एंड फाइंड द आंसर। Hmm? 54 We have मीटर क्लॉथ, yes, sir. 54 मीटर क्लॉथ में 24 ट्राउजर्स बनते हैं। ओके, Sir, second class question. सो फॉर वन ट्राउजर you will need how much of cloth? This you have to find out. So to find the cloth, to find the quantity of cloth, the length of the cloth, you will divide 54 by 24. Okay, start doing. Write down the statements yourself. Find the answer. Keep your cameras on.
Yes. Tell me, done? Yes, sir. Done. Sir, one You will get your answer in fraction. Don't find the answer in decimal. Fraction में answer निकाल के बताइए. Sir, please see. Sir, the answer is 2 whole 1/4. What is your Excuse me, answer? 254 divided by 9/4. So you are dividing by 6. No, sir, 2. अरे And एक ही बात है again, ना. and next 3. बात वही है, डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर लो. So 54 divided by 6 is 9. 24 divided by 6 is 4. 9/4. Correct. Very good. I got 9/4. 9/4 is correct. My whole work is complete. Very good, beta. Very good. Aditya Pathak. Sir, my whole work is complete. Please see. Very good. Sir, from integers. Sir, please see. Very good. Okay. Have you all done question 10? Sorry, 11? Completed? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, now new chapter. Question 12. Question 11 was very easy. The answer is 9/4. 9/4. I hope everyone Sir, has done if it. it is a combination class, नहीं बेटा. तो This सर is- सर this एक बच्चा सर फिफ्थ बी से fifth B Afraz का Ali है। Khan, 5th B. No, sir, 5th B. Afraz Ali Khan. Beta, Yes, sir, that 50. is student has maths period in the next class. Next maths class in the next period. Okay. इसलिए they have joined. That student has joined early. Okay, question 12. Sorry, not 11. So 13 can we do by ourselves? It's very easy. Question 12. How many pieces each of length 3 whole 3/4 meter can be cut from a rope of 30 meter? Okay. So total length of rope. Length of each piece. दोनों चीजें आपको given है. Total length of rope 30 meters. Length of each piece 3 whole 3/4 meters. Okay. The number of pieces ये आपको निकालना है. Equals to 30 divided by 3 whole 3/4. Divide करिए and answer बताइए. You will divide yourself. I will not divide. Start dividing and find the answer. Easy question है. Yes, sir. Sir, answer is 8. Sir, 8 meter.
No, sir. Answer is 8 meter. Sir, the answer is 8 meter. The answer is 8 meter. Yes, sir. Yes, correct. Very good. 8 pieces, not 8 meter. 8 pieces. Answer is 8 Okay, sir. pieces. So now, which chapter?